Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 14th of October. The session will be quite interesting and important, students, so stay tuned with us till the end. In this video, students, we are talking about Prime Minister Narendra Modi, who have launched mission for Atmanirbharta in pulses. So to grow the pulses sector, this has been launched. Then we will be talking about Netflix India. They have partnered with IICT and FICCI to support India's AVGC XR sector, that is your audio video extended reality sector. Then Rajnath Singh, our defense minister, was on a visit to Australia lately, and Flipkart and Pine Labs, they have launched Flipkart Bharat Yatra card. All these things and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. And students, I need to see maximum likes from all the students watching this video. Before moving on, I want everyone to hit the like button here. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So let's start with national affairs. Prime Minister Narendra Modi has recently launched two major schemes. What are those schemes? PMDDKY, that is your Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana, and Mission for Atmanirbharta in pulses. These are the two schemes that has been launched recently in the agriculture sector, and they have been launched under special Krishi program with an outlay of 35,440 crore rupees. Now, what is the main aim of this, right? So it is to promote the agriculture security here. Correct. And here, if we talk about these program, first let's talk about Pradhan Mantri or Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. This is a scheme that is designed to catalyze the growth in 100 agri districts. Let me show here itself. This is for 100 agri districts through saturation based convergence of 36 central schemes across 11 ministries with an outlay of 24,000 crore rupees for a period of 6 years. What does this mean is that under this, the 36 central schemes will be implemented in these 100 agri districts, that is your agriculture districts, where the people, the agriculture or the farmers will be able to get the benefit of these 36 central schemes here that are being launched by different 11 ministries. Right, so this is your PM Dhan Dhanya Krishi Yojana. Next is Mission for Atmanirbharta in pulses. That means self-reliance in the pulses. Correct. And this scheme was launched with an outlay of 11,440 crore rupees and will be implemented for the next 6 years, that is from FY26 till FY31. This will enhance the self-efficiency in the pulses by enhancing the domestic production, reducing the import dependence, and sustainably improving the farmers' income. Correct, students? So take a note of this, and you can see a direct here. This special Krishi program was launched by IARI in New Delhi, outlay 35,440 crore rupees, and these are the two schemes that has been launched here. And third is your fisheries project, where 7 new projects has been launched for the foundation and 9 projects were inaugurated lately. Next, Netflix India. We all know what is Netflix. Netflix is an OTT platform where you can find all the major shows and TV series. Correct. So Netflix India, they have partnered with IICT. IICT is your Indian Institute of Creative Technology, and FICCI, that is your Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, to support Indian students in this AVGC XR, that is your animation, visual effects, gaming, cosmic and extended reality sector. So we can say that this extended reality animation sector will be growing in India. This sector will be promoted and it will be getting a boost from this collaboration here with Netflix. How? Because people can now, here the students in this particular sector will now be able to develop various films, series, movies that can be listed on Netflix India. Correct, students? Take a note of this. Right? Next is international affairs. Union Minister Rajnath Singh, who is our defense minister, was on a visit to Australia from 9 to 10th of October. This was at the invitation of the Richard Marles, the Deputy Prime Minister and Defence Minister of Australia, and this is the first ever visit of an Indian Defence Minister in Australia since 2014. And this meeting, it aligns with the 5th anniversary of India-Australia Comprehensive Strategic Partnership that was signed in 2020. Also, during this meeting, India and Australia have signed 3 significant defence cooperation agreements, right? So take a note of this. Next,
Next is banking and finance. Flipkart and Pine Labs, they have launched Flipkart Bharat Yatra card, right? This is a prepaid transit card that enables the seamless cashless travel across metros, buses and other public transport networks supporting the National Common Mobility Card standard. Currently, this card is available in New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai and Ahmedabad, Gujarat. So take a note of the location where this card is available, and this will enable seamless, contactless and unified transit payments, and the limit here is up to 2000 rupees. Next is Gurugram. Gurugram is in Haryana. They have got India's first QR based kiosks to pay the traffic fines. Means it will make it easy for the individuals who want to pay for their challans, and they do not need to visit the courthouse visit. So it will reduce the need for the courthouse visit, and it will streamline the payment process for the traffic fines. Correct? Where is it? This QR based kiosk has been established. It has been established at the Ambience Mall, that is in Gurugram, Haryana. It is for easier and faster traffic challans payment through QR code. It has been established by the Gurugram Police and GMDA, Gurugram Metropolitan Development Authority. Next students is awards and recognition. We are talking about Nobel Prize in Economic Sciences, right? And this important, take a note of this. As you can see, 3 individuals, Joel Markier, Philip Aghion and Peter Howitt. Right, these are the 3 individuals that have been awarded with the Nobel Prize in Economics, right? But it is known by what name, this award? This award is known by the name Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences, and it is given in the memory of the Alfred Nobel. Take a note of this. The Nobel Prize will be presented on 10th of December in Oslo, Norway, commemorating the death anniversary of Alfred Nobel. Right, very important. Take a note of this. Correct. Next. Here you can see this is for explaining innovation driven economic growth, and these 3 individuals have been awarded with this Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences, also the Nobel Prize in Economic Science. Next is 5 Maharashtra beaches received the International Blue Flag certification. What is this Blue Flag certification all about, and why this certification is given? Basically, this Blue Flag certification was established in 1985, and it was launched by the Foundation for Environmental Education of France. And this Blue Flag certification is recognized as one of the world's most recognized voluntary awards, and this flag is basically assessing the beaches and environmental areas on 33 parameters, and it is making sure that the location is clean, right? It is sustainably managed and it is taken care of. The biodiversity is flourishing there, pollution is not there, right? And many other things, the safety is there, and many other things are being assessed. So recently 5 beaches of Maharashtra has received this International Blue Flag certification. Important. This award is awarded by FEE. What is FEE? Foundation for Environmental Education of France. Correct. And here 4 main categories, that is environmental education, information, water quality, environmental management and safety and services were taken into consideration. And with the addition of these 5 beaches into the Blue Flag certification, total Blue Flag sites in India is now 18. Now this question can be asked, what is the total number of Blue Flag sites in India? So it is 18, and 5 have been recently added from Maharashtra. Which are these 5 sites? You can see here Srivardhan and Nagaon beaches, then Parkana, that is in the Palghar district, Guhagar and Ladgar beaches of Ratnagiri district. These are the 5 beaches that have been recently granted this Blue Flag certification. Next is students, Global Finance has recognized DBS Bank as Asia's safest bank for the 17th consecutive year. I repeat, Global Finance, they have released a report about the world's safest bank in the Asia for 2025, and according to them, the DBS Bank, that is of Singapore, it has been named as the Asia's safest bank for the 17th consecutive year from 2009 to 2025. It is also maintained their position as the second safest commercial bank globally in the world's 50 safest commercial banks ranking, and 2025 ranking marked the 34th edition of this report. Correct? Take a note of this. If we are talking about the safest bank in Asia, it is DBS Bank. And if we are talking about the safest bank globally, which is that bank? Consider it is your KfW bank, that is of Germany. Correct? Also, this world's safest bank in Asia, this was the 34th edition of this report that was lately released. Next is appointments and resignation, students. RBI has appointed Sonali Sen Gupta as the new executive director. She will be coming into position from 9th of October 2025, and her appointment follows the elevation of Shirish Chandra Murmu as the deputy governor of RBI. So direct appointment.
Next is Dan Katz, appointed as the IMF's first deputy managing director, and he will be succeeding Geeta Gopinath. Direct question, another appointment, then important appointment. Here, Dan Katz, he is an American economist and a policy advisor with over a decade of experience in international economic affairs. Moving to science and technology, Galaxy Space, they are launching the world's first multi-sensor Earth observation satellite, that is Mission Drishti, in 2026. This Galaxy, it is a space tech startup, right? And what they have announced, they have announced Mission Drishti, right? This is the world's first Earth observation multi-sensor satellite. This will be launched in the first quarter of 2026. The satellite will be weighing 160 kilograms. It will have a resolution of 1.5 meter and it will be launched using the SpaceX rocket. Also, this satellite, that is an Earth observation satellite, so it will be utilized in various sectors such as your agriculture sector, urban planning, environmental monitoring, disaster monitoring, scientific research, right? And it will be a very beneficial for India. Moving on. Next, students, global finance, they have recognized, we have seen DBS Bank as the Asia's safest bank for the 17th consecutive time, and this was during the 34th edition of the report. Then next students, we are talking about sports. That is the 11th edition of the Asian Aquatics Championship was recently held in Ahmedabad, Gujarat. And if you remember, students, Ahmedabad is now being considered as the sports capital of India. Reason being, we are also now bidding for the 2030 Commonwealth Games and 2036 Olympic Games. Correct? And now we are seeing that the 11th edition of the Asian Aquatics Championship it was held in Ahmedabad, Gujarat. Right? This was the 11th edition. It was held at the Veer Savarkar Sports Complex in Ahmedabad, Gujarat, and it was for the first time that our country India hosted this event, and second time it took place in South Asia. Also, who secured the top position in the medal tally? It is China that dominated the medal tally with 54 medals, followed by Kazakhstan on second position with 23 medals and Japan on the third position with 21 medals. If we talk about our India stood with 13 medals. Correct? Important, students. Then moving on. Next is Rajputana Royals has won the inaugural Archery Premier League. See, IPL is your Indian Premier League related to cricket, and this Archery Premier League is related to archery event. This was the inaugural edition. That means it was the first edition of this Archery Premier League, and Rajputana Royals is the team of Rajasthan that has won the champions of the inaugural Archery Premier League after defeating Prithviraj Yodhas of Delhi by 4-4 after 4 sets and clinching victory in the thrilling shoot-off at the Yamuna Sports Complex in New Delhi. So it is Rajputana Royals, that is from Rajasthan team, right? They have recently won the inaugural edition, that is the first ever edition of the Archery Premier League that was held where? In New Delhi. Correct, students? Take a note of it. Next is Obituary. Oscar-winning actress Diane Keaton has recently passed away at the age of 79 in California, USA. In 1978, she won the Academy Award, that is Oscar, for the Best Actress for her role in Annie Hall. Next is important days. World Arthritis Day observed on 12th of October. It is to raise awareness about the RMDs, that is your rheumatic and musculoskeletal disease, and to prevent them, their conservation, how we should make sure that we are safe from them. If an individual is contracted with this disease, how they are safe, what should they take care of, and everything. Here you can see purple ribbon. It is the symbol for this day, and there is a theme here, that is achieve your dreams. This is the theme here that you need to take care of, right? First celebrated in 1996. Next is International Day for Disaster Risk Reduction, observed on 13th of October, and it is to raise global awareness and encourage the action for reducing the disaster risk. There is a theme here, fund resilience, not disasters. Fund resilience, not disasters is the theme here, first observed in 2010. Next is state news, students. Assam's Chief Minister has launched Shraddhanjali scheme for the repatriation of the mortal remains. I repeat, Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sharma has launched Shraddhanjali scheme to ensure the dignified returns of the mortal remains of Assamese residents who die outside the state at Lok Seva Bhavan in Guwahati, Assam. So all the individuals of Assam who have passed away outside India, right, and their families are not well off that much, correct, then so to provide them Shraddhanjali and to ensure their dignified return of their mortal remains to Assam's, correct, back to Assam, this day or this scheme has been launched, that is Shraddhanjali scheme, launched by Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sharma ji.
So that's all for the day, students. Now it's time for the revision parts. Let's move to the important revision current affairs. Which company became the first Indian firm in renewable energy sector to surpass 15,000 megawatt of installed operational capacity after commissioning 1,011.5 megawatt of power projects in Khavda, Gujarat? So which company became the first Indian firm in the renewable energy sector to surpass 15,000 megawatts? It is Adani Green Energy Limited. Next, in June, where did Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlikar launch the Raj Bhavan Anandhan scheme? Anandhan scheme. Repeat, that is Raj Bhavan Anandhan scheme. So where did Kerala's Governor Rajendra Vishwanath Arlikar ji launched it? It was launched in Goa, right? And a check of worth 1,20,000 rupees was handed over to the Goa State Providence Organization with a financial assistance of 25,000 rupees each was provided to approximately 40 patients during the event. Next, where was the first Association of Southeast Asian Nation India Cruise 2025 dialogue held, which was inaugurated by Sarbandana Sonowal in June? So, where was the first Association of Southeast Asian Nations India Cruise, that is Asian India Cruise dialogue held? Where was this held? It was held in Chennai, Tamil Nadu, and it is to boost the cruise tourism in India, right? Because this in itself is a big economy, correct? And under this Sagarmala initiative also, which was launched in 2015, the aim is to modernize the India's ports and also the coastal as well as inland waterways development so that better logistics can also take place. Next, name the new super application launched by the Ministry of Railways on 1st of July, which replaced the Swarail app to provide consolidated railway services. So which is that application? It is Rail 1. This is the new super application and it was launched during the 40th Foundation Day of the Center for Railway Information Systems CRIS in New Delhi, and Rail 1 has been developed by CRIS only, correct? This is a single sign-on system and various comprehensive services are also available on this. Next, which state government launched the Digi Lakshmi scheme, a transformative initiative aimed at digitally empowering the urban poor women and promoting self-reliance through entrepreneurship? So which state government has launched this Digi Lakshmi scheme? Launched by Andhra Pradesh. And this scheme aims to enable self-help group women to become entrepreneurs under the state's One Family, One Entrepreneur vision. Next, what is the name of the National Institute of Public Cooperation and Child Development as officially renamed by the Ministry of Women and Child Development? So, what is the new name? The new name here is, what is the new name? New name here is Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. This name has been given to honor Savitribai Phule, a visionary 19th century educationist and social reformer. Next, mention the public sector enterprise that secured a locomotive export order from African Rail Company to enhance the regional connectivity in the African nations, and a railway redevelopment contract of Tumakuru railway station, that is in Karnataka, from Southwestern Railways. So mention that public sector enterprise that secured this locomotive order. It is Rail India Technical and Economic Services Limited. Next, which of the following state or union territory held their first ever Astro Tourism Festival in June? So, Astro Tourism Festival, right? That is aimed at fostering scientific curiosity and boosting the astro-tourism in the region. Which is the following state or UT started this first ever astro-tourism? It was in Ladakh, because the sky view here is very clear. The stars are visible very bright or in a clear way in these areas. Next, where was the India's first equine disease-free compartment officially recognized by the World Organization for Animal Health established? So, where was this established? It was established in Meerut, UP, right? World Organization for Animal Health officially recognized India's first EDFC, that will be located in Meerut, UP. Next, which Indian ministry rejoined the Unicode Consortium as a supporting member, gaining the voting rights alongside the United States of America? So, which is that Indian ministry? It is Ministry of Electronics and Information Technology. Next,
Name the high capacity switch cum router with 25.6 terabit per second throughput that was launched by the Union Minister of State for Rural Development, Dr. Pemasani Chandrasekhar, at the Center for Development of Telematics campus in Delhi. So name that high capacity switch cum router. It is Saksham 3000. Next, and this Saksham 3000, it is tailored for the modern data centers and it is built to power large-scale computing clusters, cloud infrastructure, 5G, 6G networks and AI workloads. Next, identify the indigenous defense manufacturer that secured emergency procurement contracts worth 300 crore rupees from the Indian Army in July for supplying bulletproof jackets and advanced ballistic helmets. So, name that indigenous defense manufacturer. It is SMPP Limited. This contract includes 27,700 bulletproof jackets and 11,700 advanced ballistic helmets that are equipped with the features designed for stringent combat conditions. Next, which state government approved the implementation of Mukhyamantri Vridhavan Gram Yojana to make the state's village self-reliant? It is Madhya Pradesh state. And under this scheme, one village from each district will be selected having a minimum population of 2,000 and at least 500 cattle. And the selected villages will be developed as the Vrindavan Grams, setting a model for self-sufficiency and holistic development of others. Next, Pandit Deen Dayal Upadhyay Garibi Mukt Gram Gaon Yojana. It was launched by the Chief Minister of Rajasthan, Bhajan Lal Sharma, in July, that aims to eliminate what in Rajasthan? So it aims to eliminate rural poverty in Rajasthan. Right, and under this scheme, about 5,000 villages will be selected in the first phase with allocation of 1,300 crore rupees to support the BPL families, that is below poverty line families. Next, students, is our homework section. First question, who was awarded with Nobel Prize in Peace? Second, Nobel Prize in Chemistry. Third, Nobel Prize in Physics. Right? Then fourth question, tell me recently, DRDO, they have launched the trials of ERA-SR from which Indian naval ship? And what is this ERA-SL? Give me the full form also and the aim of this. Fifth question, tell me recently, Operation Shiva was launched. What is this Operation Shiva about? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. And again, I'm saying, students, I want to see maximum likes from all the students watching this video. So support me and help me in my motivation. Help me that I'll be more motivated as you will be commenting and liking these videos. I'll get more motivated to make better content for you in the long run. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्सेस को ग्रो करने के लिए एंड पीएम धन धान्य कृषि योजना स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई पीएम मोदी के द्वारा. देन नेटफ्लिक्स इंडिया ने अभी पार्टनर किया ताकि ऑडियो विजुअल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट, इन सब के ऊपर काम करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ पार्टनरशिप की गई हैं. देन हम बात करेंगे राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ये ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे थे अभी रिसेंटली. एंड फ्लिपकार्ट एंड पाइन लैब्स के द्वारा फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड को लॉन्च किया गया. इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा. एंड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, राइट, टू शो सपोर्ट. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट हम डेली बेसिस पे ला सकें. वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड. माई नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से. स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस.
तो ये पहली स्कीम है, ये दूसरी स्कीम, ये दो स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई हैं एंड ये लॉन्च की गई ड्यूरिंग अ स्पेशल कृषि प्रोग्राम जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के दौरान हुआ एट न्यू दिल्ली। यहीं पे अगर हम सबसे पहली स्कीम देखें जो कि आपकी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यहाँ पे 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा एंड उनको कैटेलाइज किया जाएगा। बेसिकली जो 36 सेंट्रल स्कीम्स लॉन्च की गई हैं 11 मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उनको इसका बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। इसी के बाद आ जाती है सेकंड स्कीम जो कि है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। बेसिकली हमारा जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है इन पल्सेस सेक्टर इंडिया का, उसको हमें रिड्यूस करना है, हम पल्सेस को इंडिया में प्रोड्यूस कर सके, हम इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सके एंड फार्मर्स की इनकम हम स्ट्रेंथन कर सके, इंप्रूव कर सके, इसीलिए स्कीम लॉन्च की गई। 11,440 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया, FY26 से FY31 के लिए लॉन्च की गई है, राइट। और इसका मेन एम क्या है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है पल्सेस में, सिंपल एंड क्लियर आंसर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कीम एज वेल एज एक फिशरीज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कुछ लॉन्च किए गए एंड कुछ यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। इसके बाद आ जाते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी स्टूडेंट्स। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अभी IICT एंड फिक्की के साथ पार्टनर किया है, यहाँ पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर के ऊपर काम करने की बात की गई। यहाँ पे रहेगा कि जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे इस सेक्टर में ट्रेन किया जा सके, उनको रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके। एंड हम जानते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया क्या है, ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मूवीज, टीवी सीरीज, वेरियस शोज आपके अवेलेबल होते हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर बच्चे यहाँ पे ट्रेन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ये अपलोड कर पाएंगे इनके प्लेटफॉर्म पर, राइट। इसीलिए ये हमें पार्टनरशिप देखने को भी मिली। सो काफी बेनिफिट रहेगा, इससे इंडिया में बच्चों को भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी, उनको नई चीजों का ज्ञान होगा, उनको सीखने को मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया ने फिकी एंड IICT के साथ इन्होंने पार्टनर किया है ताकि यहाँ पे इन बच्चों को ट्रेन किया जा सके एंड ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे थे 9 से 10 अक्टूबर तक। देखो अब ये क्या शो करता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बेटर हो रहा है। एंड ये जो विजिट थी ये 5th एनिवर्सरी है ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि 2020 में साइन की गई थी, राइट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट साइन हुए हैं, जिससे हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। फ्लिपकार्ट एंड पाइन लैब्स, इनके द्वारा भी फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड को लॉन्च किया गया। ये एक प्रीपेड ट्रांजिट कार्ड रहेगा जो कि सीमलेस कैशलेस ट्रैवल को प्रमोट करेगा अक्रॉस मेट्रोज, बिजनेसेस एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो सपोर्ट करेगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड को। करंटली ये कार्ड न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड अहमदाबाद, गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फिर गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, इनको इंडिया का पहला QR बेस्ड कायोस्क मिला टू पे ट्रैफिक फाइन्स। देखो क्या होता है, आपको ट्रैफिक पे करने के लिए कोर्ट हाउस विजिट करना पड़ता है कई बार, तो यहाँ पे QR बेस्ड कायोस्क स्टैब्लिश किया गया है कि QR कोड से आप UPI के थ्रू इजीली पेमेंट कर पाएंगे। ये जो कायोस्क है ये कहाँ सेटअप किया गया है, ये एम्बियंस मॉल में सेटअप किया गया है। एम्बियंस मॉल्स कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम पुलिस एंड गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस इनिशिएटिव को लाया गया है ताकि जो चलान्स है उनको इजीली एंड फास्टर तरीके से यहाँ पे करा जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस की, जिसको हम रिस्क बैंक प्राइज या फिर स्वेगेस रिस्क बैंक प्राइज के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये वो प्राइज है एंड इसको हम नोबेल पीस प्राइज के नाम से जानते हैं और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस के नाम से जानते हैं। आई करेक्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वेगेस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस को ही हम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस के नाम से जानते हैं, राइट। तो अभी रिसेंटली जॉल मैकेर, फिलिप एगेन एंड पीटर हॉविट, इन तीनों को यहां पे सम्मानित किया गया स्वर्गिस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस से। किस लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड तीनों को यहां पे सम्मानित करा गया है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर आ जाते हैं इसके बाद, अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है कि सस्टेनेबली डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया जा रहा है इन बीचेस पर, इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जा रहा है, सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, प्रॉपर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, पॉल्यूशन नहीं फैलाया जा रहा है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश कर रही है, फ्लोरा फौना यहाँ पे फ्लरिश कर रही है, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली 5 महाराष्ट्र बीचेस को यहाँ पे सम्मानित किया गया इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से। एंड अब जो टोटल नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस है इंडिया में वो है टोटल 18। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको मार्क करेंगे। फिर ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है किसके द्वारा दिया जाता है, FEE के द्वारा दिया जाता है। FEE क्या होता है, FEE होता है आपका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट। एंड ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है इसको ग्लोबली एक्सपेंड कर दिया गया था 2001 में, पहले 1987 में यहाँ पे फ्रांस में दिया जाता था, ठीक है। तो अभी 5 महाराष्ट्र बीचेस को यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। टोटल नंबर इंडिया में 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं। कौन कौन से बीच है यहाँ पे महाराष्ट्र में, श्रीवर्धन एंड
नगांव बीच जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, परनाका जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, एंड गुहागर एंड लडगार बीच जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। तो ये 5 बीचेस को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स ग्लोबल फाइनेंस। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि है वर्ल्ड के सेफेस्ट बैंक्स इन एशिया की रिपोर्ट। ये आपकी रिपोर्ट रिलीज की गई है जो कि 34वां एडिशन रहेगा इस रिपोर्ट का। एंड ये रिपोर्ट दर्शाती है क्या, ये बताती है कि कौन से बैंक वर्ल्ड में सेफेस्ट हैं एंड एशिया में। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का डीबीएस बैंक जो कि आपका सिंगापुर बेस्ड बैंक है, ये 17th कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने टॉप किया है एज द सेफेस्ट बैंक ऑफ एशिया। और अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली KFW बैंक जो कि जर्मनी का बैंक है, इन्होंने यहां पे इस बार टॉप किया। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे इन दोनों चीजों को, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा, एशिया का सेफेस्ट बैंक एंड ग्लोबली सेफेस्ट बैंक कौन सा कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं। अभी आरबीआई ने अपॉइंट किया सोनाली सेन गुप्ता को एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये किनको सक्सीड करेंगी, तो श्रीश चंद्र मुर्मू जी ये एलिवेट हो गए टू द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। उनकी जगह पे सोनाली सेन गुप्ता को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। फिर आ जाते हैं डैन कैट्स, इनको अपॉइंट किया गया IMF फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सक्सीड करेंगे गीता गोपीनाथ को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर डैन कैट्स की बात करें, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है एंड पॉलिसी एडवाइजर है। डेकेड से मतलब 10 साल से भी ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड इनको यहाँ पे IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करा गया। फिर साइंस एंड टेक पर आते हैं स्टूडेंट्स। गैलेक्साई स्पेस, ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। इन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ मिशन दृष्टि। ये मिशन दृष्टि क्या है, बेसिकली ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन रहेगा। पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 से इसको लॉन्च किया जाएगा। 160 किलोग्राम का इसकी कैपेसिटी रहेगी, वेट रहेगा। 1.5 मीटर का इसका रेजोल्यूशन रहेगा। एंड इससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम कर सकते हैं। इन सेक्टर्स को इससे बूस्ट देखने को मिलेगा एंड इन सेक्टर्स में हमें काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जैसे सैटेलाइट का डाटा मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो फार्मर्स पहले से ही प्लान कर पाएंगे कि क्या इन्वायरमेंट रहेगा, कैसा वेदर रहेगा उनके एरिया में, जिससे वो प्लान अहेड कर सकते हैं कि क्या हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है, किस तरीके की क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, कब क्रॉप करनी चाहिए, कब बारिश होगी, कब सूखा आएगा। तो ये सारी चीजें पता रखती रहेंगी। राइट, सो टेक अ नोट ऑफ दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि मिशन दृष्टि के नाम से यहां पे लॉन्च की जाएगी, ये गैलेक्साई स्पेस के द्वारा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 11th एडिशन ऑफ द एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में। देखो अहमदाबाद गुजरात को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया की तरह जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 2036 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने की बिड भी अभी सबमिट करी है। राइट, एंड कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में इनको होस्ट करने की बात की जा रही है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वापस आते हैं 11वें एडिशन ऑफ एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की, जो कि कहां पर हुआ? अहमदाबाद गुजरात में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिला था। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने इस इवेंट को होस्ट करा। यहाँ पे मेडल टैली में किसने टॉप किया? चाइना ने टॉप किया विद 54 मेडल्स। फिर आ जाते हैं कजाकिस्तान ऑन द सेकंड पोजीशन विद 23 मेडल्स एंड फिर जापान ऑन थर्ड पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 21 मेडल्स। इंडिया के पास कितने मेडल्स आए? यहाँ पर 13 मेडल्स इंडिया ने यहाँ पे सिक्योर करे। इवेंट कहां पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर हम बात कर रहे हैं आर्चरी प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग भी लॉन्च हुई थी फुटबॉल के लिए, और अब हो गई है आर्चरी प्रीमियर लीग। इसका इनॉग्रल एडिशन था, मतलब पहला एडिशन था। कहां पर हुआ था? यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। एंड राजस्थान की टीम राजपुताना रॉयल्स, इन्होंने यहां पे इस चैंपियनशिप को जीत लिया है बाय डिफीटिंग पृथ्वीराज योद्धास ऑफ दिल्ली इन द फाइनल्स। राइट, तो किसने जीता इनॉग्रल एडिशन, मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग को? तो राजपुताना रॉयल्स ऑफ राजस्थान, इन्होंने इस इवेंट को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर ऑबिटरी के ऊपर। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस डियाने कीटन, इनका निधन हो गया 79 की एज में, कैलिफोर्निया यूएसए में। 1978 में इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस रोल इन एनी हॉल। इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यह डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, जो कि जिसको हम RMDs कहते हैं, एंड इनकी प्रिवेंशन एंड कैसे इनको रोक सकते हैं, क्या इनका केयर है। राइट, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए यहाँ पे आप ब्लू रिबन देख सकते हैं, ये इसका एक सिंबल रहेगा। एंड थीम रहेगी अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर ड्रीम्स, ये यहाँ पे इसकी थीम रहने वाली है स्टूडेंट्स। 1996 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस एंड एनकरेज द एक्शन फॉर रिड्यूसिंग द डिजास्टर रिस्क। थीम रहेगी फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। पहली बार इसको 2010 में ऑब्जर्व किया गया था, सो टेक अ नोट ऑफ इट।
इसके बाद आते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर। असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया श्रद्धांजलि स्कीम फॉर द रिपाट्रिएशन ऑफ द मॉर्टल रिमेन्स। देखो, असम के जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है असम स्टेट के बाहर एंड उनको वापस उनके मॉर्टल रिमेन्स को वापस स्टेट में लाने के लिए, उनके होम टाउन में लाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। जो बीपीएल लोग हैं, लो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, राइट, जो वेल ऑफ नहीं है फाइनेंशियली, उनको यह फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा। 40 से 50,000 रुपए तक का यहाँ पे खर्चा कॉस्ट कवर करेगी सरकार फॉर द रिपाट्रिएशन। एंड यहाँ पे 112 जो कि पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है ताकि लोग इस पे कांटेक्ट कर सके एंड उनको हेल्प किया जा सके जिन लोगों की मृत्यु हो गई है एंड जो बाहर स्टेट में मृत्यु हुई है उनकी बॉडीज को वापस असम स्टेट में उनके होम टाउन तक लाने का ये एक अच्छा इनिशिएटिव, ये जिसको श्रद्धांजलि स्कीम बोला गया, लॉन्च की गई। सो टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहां पर? ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अमित शाह के द्वारा कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में, राइट। एंड यहाँ पे एम है कि हम कैसे टर्मरिक के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जा सके 2030 तक। टर्मरिक होता है हल्दी। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डेडिकेट किया एक हेजिंग डेस्क पुणे में अंडर स्मार्ट प्रोजेक्ट जो इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस मिले, आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखे, राइट, महाराष्ट्र में। तो ये इनिशियली जो डेस्क था ये किन क्रॉप्स पे फोकस करेगा जो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज की गई हैं? तो यहाँ पे जो क्रॉप्स अंडर फोकस में रहेंगी वो है कॉटन, टर्मरिक एंड मीस। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 6 साल के तेजबीर सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने या फिर विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी आफ्टर कमिशनिंग 1011.5 मेगावाट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन खावड़ा, गुजरात, राइट। तो विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट्स? तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, इन जून कहां पर वेयर डिड द केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया राजभवन अन्नधन स्कीम को, राइट, राजभवन अन्नधन स्कीम को। तो कहां पे लॉन्च किया इनके द्वारा गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे एक चेक दिया गया 1,20,000 रुपए का, हैंडेड ओवर टू द गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे फाइनेंशियल एड ऑफ 25,000 रुपीज ईच प्रोवाइड किया गया था टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, राइट, इनॉग्रेटेड बाय सरबंदना सोनोवाल। तो वो है चेन्नई में, हमें ये देखने को मिला, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उस नई सुपर एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई ऑन 1 जुलाई, जो रिप्लेस करेगी स्वारेल एप्लीकेशन को टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड रेलवे सर्विसेज। वो है रेल 1, राइट। ये नई सुपर एप्लीकेशन है जो कि 40th फाउंडेशन डे ऑफ CRIS के दौरान लॉन्च की गई थी। CRIS क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लक्ष्मी स्कीम को, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट डिजिटली एम्पावरिंग द अर्बन पुअर वीमेन एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, राइट, ये डिजी लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड एक इनिशिएटिव और है जो कि है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योरशिप, और 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर, इसके अंडर यहाँ पे लाया जाएगा कि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नया नाम बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको ऑफिशियली रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली। तो क्या नाम रखा गया है इसका? ये है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि एक विजनरी थी, 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया लोकोमोटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, जो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी इन द अफ्रीकन नेशंस एंड रेलवे रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुमकुरू रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला। तो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया ये लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स ऑर्डर का फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी। तो वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हेल्ड देयर फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जून के महीने में दैट इज एम्ड एट फॉस्टरिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड बूस्टिंग द एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन, तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट, इन जुलाई वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट equine disease compartment officially organized by the World Organization for Animal Health established, तो कहाँ पे इंडिया का पहला equine disease free compartment को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये रहेगा मेरठ यूपी में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं विच इंडियन मिनिस्ट्री इन्होंने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड यूएसए, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे यूनिकोड कंसोर्टियम को वापस से ज्वाइन किया गया है। यहीं पे याद रखेंगे यूनेस्को ने एग्जिट कर दिया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है यूनेस्को से एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने जनवरी में एग्जिट ले लिया था। नेक्स्ट, नेम द हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर विद 25.6 टेराबिट पर सेकेंड थ्रूपुट, जिसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर के द्वारा एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स कैंपस इन दिल्ली। इसका नाम रहेगा सक्षम 3000। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। एंड इसको डेवलप किया गया है C.DOT के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सक्षम है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मॉडर्न डाटा सेंटर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सके, लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G जनरेशन 6G जनरेशन नेटवर्क्स हो उनको यूज़ कर सके एंड AI के वर्कलोड्स को ये संभाल सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर दैट सिक्योर्ड इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी इन जुलाई, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे एंड एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स यहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर वो है SMPP लिमिटेड एंड 300 करोड़ रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जहाँ पे 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि स्टेट लेवल विलेजेस को यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके, राइट। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एंड उनको मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए वहाँ पे एंड 500 कैटल्स होनी चाहिए एंड इन सेलेक्टेड विलेजेस को वृंदावन ग्राम से बोला जाएगा, जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान में। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इनका एम रहेगा कि एलिमिनेट कर सके हम क्या, रूरल पॉवर्टी को इन राजस्थान, राइट। रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। नेक्स्ट है, कर्नाटका के कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ बेंगलुरु सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम के बिहार पे इस यूनिवर्सिटी का नेमिंग की गई है एंड ये इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इसकी नेमिंग की गई। ये 13th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 10 साल के लिए, 2 टर्म के लिए थे 2004 से 2014 तक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। Next students is our homework section. First question, who was awarded with Nobel Prize in Peace? Second, Nobel Prize in Chemistry. Third, Nobel Prize in Physics. Right? Then fourth question, tell me recently DRDO, they have launched the trials of ERA-SR from which Indian naval ship, and what is this ERA-SL? Give me the full form also and the aim of this. Fifth question, tell me recently Operation Shiva was launched. What is this Operation Shiva about? So these are your 5 homework questions students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. And again I am saying students, I want to see maximum likes from all the students watching this video. So support me and help me in my motivation, help me that I'll be more motivated as you will be commenting and liking these videos. I'll get more motivated to make better content for you in the long run.